Hello everyone, my name is Shyam Manavat and we are starting a new lecture, new chapter that is on graphs. Okay, so we have some series of lectures. I request you all of you to watch that properly. Some of the concepts we have discussed in the previous chapters as well, but आपको इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर में भी मजा आने वाला है. So let's get started. Understand XY plane. अच्छा ग्राफ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड XY plane. ओके, XY plane we need to understand well. क्या होता है आपको सबको पता होगा. वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ. वी नीड दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस मिलेगा, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस मिलेगा. एक्स एक्सिस द वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. when where they intersect, this intersection point is called origin. इस intersection point को हम लोग बोलते हैं क्या? Origin. Now you also have to understand, you should also understand, ये जो ग्राफ होता है आपको 2D ग्राफ होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो अ लाइन एन एक्सिस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, एंड वाई एक्सिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. Yeah, I'm working on my handwriting. I hope the students who are following, or if you're following my lectures, I hope you remember how worst it used to be. But अभी काफी improvement आ गया. Okay, ऐसा मुझे लगता है. Okay, so x-axis is horizontal axis, which is independent variable. Y-axis is dependent variable. We will learn this more about independent and dependent variable when we are going to study functions, or when we study um, data interpretation. Yes, there also we'll see graph, but that will be different type of graph. Well, so ये अपने को पता होना चाहिए. जैसे for to give you one example, when you say function, you write f of x equal to some expression of x, let's say x square plus 2. So here x is what? Independent variable that you substitute some value there at in this function. To substitute a value, so you substitute the value of x so that you get the value of f of x, which is also y, which can also set to be वेरिएबल y. ये ऐसा होता है. हालांकि इसका ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं है, बट अभी आग दिख गया तो बता दिया. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन. ओरिजिन के राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन यू फाइंड पॉजिटिव x, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन यू गेट नेगेटिव साइड ऑफ x, नेगेटिव x. ओके, व्हाट डज इट मीन? इफ यू सो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, अच्छा व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट, एड्रेस ऑफ द पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इनके नंबर्स के फॉर्म में होता है कोऑर्डिनेट. सो दिस ओरिजिन, coordinate of origin is always 0 comma 0, that you start with origin. Start kare, origin is what? 0. So if you go towards right hand side, you get 1, 2, 3, so on. And if you go towards left hand side, you get -1, -2, -3, so on. Origin के ऊपर क्या होगा? Y positive. Origin के नीचे क्या होता है? Y negative. If you go towards upward from origin, you get positive values of y, and if you go downwards, you get negative values of y. Example, you have 1, 2, 3, and here -1, -2, -3. Okay, it's not uh, on the scale, so please ignore the distance. यहाँ पे देखो 1 और -1 -2 के बीच का जो डिस्टेंस है, -2 -3 के डिस्टेंस है, थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा अलग लिखेगा आपको. सो प्लीज इग्नोर दैट पॉइंट. आपको समझना, जो समझना उस पर ध्यान दो. ओरिजिन से डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, ओरिजिन से अपवर्ड इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, ओरिजिन के राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, एंड लेफ्ट हैंड side is negative value of x. Okay, so you should understand what are the axes. Horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. Origin, the 0 comma 0, where both axes intersect. Quadrants, what are quadrants? देखो, now this
these axes divide the entire plane into four part. ये फोर पार्ट है, देखो यहाँ पे फोर पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, या वी गो इन एंटी क्लॉकवाइज. फर्स्ट, सेकंड, third anti-clockwise, and then fourth. Fourth, four quadrants. Divide into four quadrants. They are called quadrants. Four quadrants. Okay. First quadrant where you have X and Y both positive. Okay. X positive, Y is also positive. Second quadrant, Y is positive, but X is negative. X is negative, Y is positive. Third, here you get both negative. X is also negative and Y is also negative. Okay. Fourth quadrant, here you get X positive and Y negative. Yeah. I'll explain what is this positive negative. So suppose if you have to plot a point on this graph XY plane, point. Now point टू डायमेंशन ही अपने को करना है. थ्री डायमेंशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम. सो आपको टू डायमेंशन पे भी काम करना है. सो पॉइंट इज ऑलवेज written in form of x comma y. X comma y. Okay. The first number represent the value of x-axis or value on x-axis, and y, the second number represent the value on y-axis. Okay. So suppose if I have a point, let's say I have a point A, which is 2 comma 3. So by looking at this, you can say it belongs to which quadrant? Both are positive, then it will be in the first quadrant. Draw करें इसको, draw करें, चलो draw करते हैं. Let's plot the point. Again, let me mark some points here. 1, 2, 3, 4. Here we have this is origin, and here you got -1, -2, -3, -4, and here you have 1, 2, 3, 4. Okay. Now, if I want to plot the point A, which is 2 comma 3, let's say 2 comma 3. So I will check where do I get 2 on x-axis. Coordinate is always coordinate. Okay. This is called what? Coordinate of point. Coordinate of point. Okay. So first, this 2 is on x-axis. So x-axis पे 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है. ध्यान से लिखना. Y पे क्या मिलेगा? Y पे क्या ढूंढना है? 3. So on y-axis, see where is 3? Now you need to draw a line from this 3, which is the point on y. From this 3, ऐसा dotted line मैंने draw किया, which is parallel to x-axis. ठीक है? Similarly, at x is equal to 2, this x quadrant is 2, value of x is 2. इस पे हमने ड्रॉ किया एक लाइन which is parallel to y-axis. पैरेलल दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और फिर से करता हूँ मैं. पैरेलल टू पैरेलल बनाया मैंने. ओके. नाउ here they intersect. Correct. Now this is nothing but point A, which is 2 comma 3. बात आई समझ में? फिर से करें. फिर से करें. What do we need to do? The x coordinate, x coordinate, x coordinate, x axis पे जो point है, x axis का जो value है, जो point है, point on x axis. From there you draw a line which is parallel to y axis, and y coordinate, y axis पे जो point है, you need to draw a line which is parallel to x axis. The point of intersection of these two lines, that is the point. Okay, that is the point. Yeah, हम लोग क्या समझ रहे हैं? ग्राफ समझ रहे हैं. Okay, application of exams we will see later. First we need to understand how to deal with graphs. Yeah. Okay. All right. So please don't come to the conclusion that इसका एग्जाम का रिलेशन क्या है और एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके ऊपर पहले समझ लो अच्छे से. वी आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, focus on building a strong foundation. So point
Plot the point on the graph. Yeah, let's take another example. Let's take another example here. Let's say, let me plot a point B, which is -2, 3. Okay, -2, 3. Yeah, -2, -4. चलो ऐसा लेते हैं. -2, -4. So what will you do here? The coordinate is in form of what? X, y. So you need to have -2 on x. Where do you have -2 on x? -2 कहाँ मिल रहा है आपको देखो? On x. अच्छा यहाँ पे ये जो y coordinate नेगेटिव when you go down. Okay. -2 कहाँ मिल रहा है? ये रहा x एक्सिस पे -2. -4 कहाँ मिल रहा है y पे? This is -4. Okay. So when you see in this parallel to the x-axis value to the y-axis, and that when the point of intersection, this is the point -2, -4. Okay, people who know should you should skip this part and go to the next point. Graph of linear equation. People who want to see one more example, look at this one more. Look at one more example. I hope you understood how to plot the graph. How to plot the graph. All right. Okay. Let's say one more. One more. Let's say point C. Now this time I want you to pause the video and then you tell me where should be the point, this point C. Let me say this is point -1, 3. Yes, -1, 3. Yeah. Okay. So -1 on x-axis. So here you have -1 on x-axis and 3 on y-axis. 3 on y-axis. In dono ka here. This is where we should get point C. This is where we should get point C. Yeah. 3 or 4 ka. 3 or -1 ke intersection pe you should get point C, which is what? -1, 3. Okay. क्लियर है, इजी है, या तो दिस इज हाउ यू प्लॉट द पॉइंट. ये देखो यार, अगर आपको स्प्रिंट करना है तो पहले वॉक करना तो सीखना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ग्राफ वेल, you need to understand axis, you need to understand how to plot the point. Now let's talk about the graph of linear equation, or graph of line. Yeah. Now, general equation of line is y equal to mx plus c or ax plus by equal to c. This we have studied in the linear and simultaneous equation as well. We have studied how to plot the graph there also for linear equation. Yeah. So it will be kind of a recap or something new we'll study here as well. So ध्यान देना यहाँ पे. So there are two general form of linear equation or equation of line, which is y equal to mx plus c, or here you have ax plus by equal to c. Okay, yes, c is a constant. Okay, don't feel that this c and this c should be same. They are constant. So please understand they can be any random value, but they are constant. Now, इसका मतलब क्या? Now this is equation of line in terms of slope. ध्यान इसमें ध्यान देना. Equation of line in terms of slope. I hope you are making handwritten notes. लिख लो ऐसा. Slope, equation of line in terms of slope, where m is a slope. ये m का बहुत इंपॉर्टेंस है ग्राफ में, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. When you change the value of slope, then what happens? So we are going to discuss this at the end of this particular lecture, this particular class. So यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसकी. तो उसके पहले हमें समझना है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y. Okay, yeah, clear. So this is m is what? M represents slope. Here m is what? Slope. Now what is slope? Slope को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. What is slope? Slope is the एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. तो क्या होगा ना पहले इसको इसको समझो. यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियर इक्वेशन. अभी लीनियर इक्वेशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इक्वेशन व्हिच इज गिवन इज लीनियर इक्वेशन? ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देयर आर वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है, एक्स है, वाई है, ये ठीक है, बट पावर ऑफ एक्स एंड वाई should be
1 or 0. Should be 1 or 0. Yeah, it cannot be 2. If it is 2, then it will be quadratic. It will be quadratic equation. Yeah, here ax square plus bx plus c. ऐसा देखा है हमने ना quadratic equation में. So how will you identify when if the equation is linear equation? The power of variable is 1. It's a first order equation. It is what? It's a first order equation. In layman term, power देखो, x का power देखो, y का power देखो, power 1 होना चाहिए. Then you can say that is linear equation. यहाँ तक ठीक है. So let's see how does this line look like on the xy plane. ये आपका हुआ xy plane, let's say. Yeah. Okay. This is xy plane. Now this xy plane, यहाँ पे ये हो गया आपका origin. So अब straight line is what? Straight line है, curve नहीं होता है, straight line. So straight line, it could be either one of them, पर ध्यान से समझना, slope हम लोग समझ रहे हैं. We are focusing on what we are trying to understand what is slope. So if I draw a line like this, then the angle of line with positive side of x-axis is slope. Okay, which can be measured in terms of theta. Yeah, or we can say the value to calculate the value. तो theta क्या होगा? Angle है ना? It could be 30 degree, it could be 20 degree, it could be 40 degree or so. एक तो हम लोग ऐसे एंगल समझते हैं, राइट? बट जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से y इक्वल टू 2x प्लस 3, नाउ हियर इट इज 2, द m इक्वल टू 2, m इक्वल टू नॉट 40 डिग्री, m इक्वल टू नॉट 40 डिग्री. Understood? So m will be in terms of the measurement. It's not angular value. It is normal number है वो, numeric value. It's not angular value. It's ये 30 डिग्री नहीं आएगा, 40 डिग्री नहीं होगा, वहाँ पे 1 2 3 -1 -2 ऐसा कुछ आपको मिलेगा. Yeah. So how to get that value? So if you know theta, if you know slope, अब यहाँ पे slope अगर theta है, so what you will do is you will say उसका tan theta निकालो and then you will get the value of m. Okay, घबराना मत, हैव पेशेंस. मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ. जिसको ये सब पता है यार, गो टू द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, हु आर बिगिनर, हु हैव नेवर सीन दिस. आप ध्यान से समझो, स्लोप क्या होगा? थीटा के फॉर्म में हम लोग देखो यार, एंगल हम लोग हमेशा डिग्री ऐसे लेते हैं, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री. बट व्हेन यू लुक एट द इक्वेशन ऑफ लाइन, यू विल फाइंड y इक्वल टू 4x plus 6, you will get y equal to minus x plus 2. So you don't get this m. If you compare this with the general form of equation of line in terms of slope, which is y equal to mx plus c, you can see here m is a number. It's not angle degree. Okay. So if you have the angle in terms of theta, then you will use tan theta to find the value of m. याद रहेगा. So ये m क्या है? It's a number. इस तरह से होता है. अब इसको थोड़ा सा tan थीटा के बारे में समझ लें. देखो m क्या है? m इज इक्वल टू tan थीटा. हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझना, बट tan का कैरेक्टरिस्टिक समझो, ये आपके ग्राफ में बहुत हेल्प करेगा ना. ये जो इसका थीटा है, सो सपोज इफ दिस एंगल थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ओके, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ m is positive. ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैल्यू ऑफ m is positive. I'll show you how to use it. If it is more than 90 degree, if it is more than 90 degree and less than 180 degree, then value of m in terms of tan theta equal to m, value of m will be negative. ये ध्यान रखना. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो, एंगल तो आप लोगों को पता होगा यार, इतना तो सबको पता है ना. जीरो आपको 90 डिग्री से कम एंगल कैसा दिखेगा, 90 से बड़ा कैसा दिखता है, 90 से अच्छा अच्छा अच्छा. एक बार बताओ, व्हाट इज द व्हाट व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री? व्हाट डज इट कॉल्ड? इफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, व्हाट डज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. हम लोग फिर आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट ये तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए. acute angle मतलब if the angle is angle
if the angle is less than 90 degree, more than 0 degree, that's acute angle, okay? That is less than 90 degree. And if it is more than 90 degree, then what does it call? Obtuse angle. इससे ग्राफ का कोई रिलेशन नहीं, बट हमें पता होना चाहिए. This is more than 0, more than 90, less than 180. ठीक है, याद रहेगा ये? याद रहेगा? ओके. अच्छा, ये भी याद रहेगा, इसको नोट किया? ये इसको नोट किया? m equal to tan theta. If theta is between 0 to 90 degree, m is positive. If theta is more than 90 degree, less than 180 degree, m is negative. ये ध्यान रखना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लाइन है उसका एंगल अगर आप थीटा से समझते हो तो tan थीटा इज m. m का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ acute एंगल बनाएगी. If the value of m is positive, then this line will form acute angle with positive side of x-axis. If value of m is negative, then the line will form obtuse angle with positive side of x-axis. Okay? ठीक है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है तो हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्कस करने वाले भी चेंज ऑफ स्लोप. ओके, बट इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए. चलो ठीक है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके बता ही देता हूँ यार. मुझसे भी ना वेट होता नहीं, मुझे लगता है बता दो, सब बता दो. My student should know everything. It become quite easy to answer the exam then, right? एग्जाम में आपको काफी हेल्प होती है उससे. Okay, now look at this. If suppose the line is like this, yeah, and it forms what? Uh, अभी बताओ, it will form what? Acute angle with positive side of x-axis or obtuse angle with positive side of x-axis. आपको ये एंगल नहीं देखना है because if you look at this angle, this is making what? This is making an angle with negative side of x-axis. ये इससे slope का कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको ध्यान नहीं रखना है. We need to look at the angle between the line and positive side of x-axis. तो लाइन से शुरुआत करके आप x के पॉजिटिव साइड पे जाओ. ओके, x के पॉजिटिव साइड पे जाओ. सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ये क्या हो गया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल. ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे if you have the equation of line here and if you write the equation of line in form of slope which is y equal to mx plus c, then the value of m will be negative here. ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा. क्लियर है ये? सो यू अंडरस्टूड स्लोप एंड देन व्हाट इज स्लोप, ये कैसे फॉर्म होता है. भूलना मत. देखो, जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सो आई विल नॉट एक्सप्लेन this concept again this much in detail, so please make notes there. Chalo, now it's time to plot some graph when the equation of line is given. अभी तक हमें स्लोप वोप समझ में आ गया है. यहाँ पे ये सब समझ में आ गया ना, स्लोप समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए. अच्छा, आप प्लॉट कैसे करोगे? दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. प्लॉट द ग्राफ एंड देन see how you get the question in exam. So now here plot the graph of y equal to 2x plus 3. 2x y equal to 2x plus 3 के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, करते हैं ग्राफ प्लॉट. चलो करते हैं ग्राफ प्लॉट. ओके, नाउ इसको ना हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट के फॉर्म में चलेंगे. हम लोग विल नॉट गो इन दैट स्कूल टाइम पे जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते वैसा नहीं करेंगे. थोड़ा हम लोग स्मार्ट मूव करेंगे यहाँ पे. विल नॉट डू लाइक स्कूल किड्स. हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल का भी ज्ञान आपको यहाँ पे यूज होगा, बट नॉट नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. y इक्वल टू 2x plus 3. You can pause this video and try sketching the graph or try drawing the graph here of this line. प्लॉट करो इसको, वीडियो पॉज करके ट्राई करो. अगर ट्राई कर लिया हो और अगर या फिर अगर इफ यू वांट टू डू इट विथ मी, देन लेट्स स्टार्ट.
ओके, नाउ हम लोगों को किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ यूनिक यूनिक लाइन. We need minimum 2 points. ओके, ये अपने को पता होना चाहिए. इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए. समझो इस बात को. Now, if I have only 1 point, आपको ये point P दे दिया. Now you have to draw a line passing through this point P. Now, understand, you can have multiple lines. आपको यहाँ से ये एक लाइन इस तरह से जा सकता है, ये एक लाइन इस तरह से जा सकता है, ये एक लाइन इस तरह से जा सकता है. There are a lot of, you can draw multiple lines passing through this point. But if you have, let's say, point P1 and point P2, okay, point P1, this is point P1 and this is point P2, then आपके पास अब कुछ बचा नहीं है. You can plot only one line passing through these points. एक ही ऐसा होगा जो एक ही ऐसा line होगा which will be passing through these points. So I hope this is clear to you. You need at least 2 points to draw a unique line. Keep in mind. Now come back to this question. Now, if you have to draw this line, you know this is equation of line. इससे आपका line ही बनेगा, line ही draw होगा, circle या कोई दूसरा figure draw नहीं होगा, because हमने इसको classify कर लिया है. If the power of variables are 1, value of power of variable x का power 1, y का power 1, so it is supposed to be, it has to be a, an equation of line. It has to be an equation of line. Okay. अब हमें ये भी पता चल गया कि we need at least 2 points. 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए. 2 से ज्यादा हुए तो चल जाएगा, बट मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए. ओके. अब ये आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू हैव मोर देन 2 पॉइंट्स और यू आर ओके विद 2 पॉइंट्स, आप मुझ पे विश्वास करना चाहते हो, कर सकते हो, करना चाहिए यार. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी. मैं अच्छा पढ़ाऊंगा यार, अच्छा पढ़ाऊंगा आपको. यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम. सो 2 पॉइंट काफी होंगे. नाउ हाउ टू गेट दोस 2 पॉइंट्स. मेरा ये मानना है कि आपको इजी इजी पॉइंट्स मिलना चाहिए. यू शुड नॉट गो विद द डिफिकल्ट वैल्यूज. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कहाँ पे करूँ यार, कहाँ पे यहाँ पे क्या. चलिए वैल्यू फिर से लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, विच इज व्हाट, y इक्वल टू 2x प्लस 3. ओके, लेट्स गो फास्ट. नाउ वी हैव, लेट्स राइट x here and y here. What I'll do here is I'll substitute the value of x0. Okay, in this equation, if I substitute the value of x0, I'll get y value what? Y equal to 3. Similarly, if I substitute value of y as 0, then I'll get x is equal to minus 3 by 2. Okay, this is how you get two coordinates. कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बहुत सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल coordinates x comma y. So you got one point as 0 comma 3, second point as minus 3 by 2 by comma 0. Okay, here you got 2 points. Let's say this is a and b. Now you can plot this on the graph. A 0 comma 3. So on x-axis you have 0 and y-axis you have 3. Then you have x-axis पे क्या होगा, minus 3 by 2 and y-axis पे 0. So y-axis पे 0 लिया और x-axis पे, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया यार. let me do it again. पॉइंट ए को फिर से देखते हैं. x एक्सिस पे यू नीड 0 एंड y एक्सिस पे यू नीड 3. सो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3. सो दिस इज योर पॉइंट ए. देन x एक्सिस पे यू हैव minus 3 by 2. So 3 by 2 is what? 1.5. So minus 1.5 एंड y एक्सिस पे क्या है, 0. तो y एक्सिस के लिए 0 होगा, x एक्सिस पे आपको minus 1.5 चाहिए होगा. तो ये रहा आपका minus 1.5. Okay, now this is what? Point B. This is point B. Now what you can do is you can join these points and draw a line.
ये हो गया आपका ग्राफ। ओके, क्या हमें एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करने आएगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। बट you will, by understanding this, how to plot the graph, you will easily be able to identify किस कौन सा ग्राफ ऑप्शन में करेक्ट होगा। सो यूजुअली यू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस इज द इक्वेशन, which option is representing the graph of this line, या और ग्राफ दिया हुआ है और which option is representing equation of this graph। सो ग्राफ इक्वेशन का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया? या सो if you have equation of line and you need to find out the graph, then you need at least 2 points। 2 पॉइंट को मिला दो, एक लाइन जो मिलेगा that will be the graph of this given equation। इजी है, क्लियर है? कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रखने हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। और कॉमन सेंस भी है यार, ये तो यार एक एक पॉइंट से तो मल्टीपल लाइंस हो जाएगी। यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू प्लॉट अ यूनिक लाइन। ओके, इजी है। कैसे किया हमने? एक्स को 0 रखा, फिर वाई को 0 रखा, यू सिमिलरली वी गॉट 2 पॉइंट्स। आप कुछ और भी रख सकते हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी। ओके, यू कैन हैव सम अदर number also। You can substitute x is equal to 2, then you will get y equal to 7, and then if you substitute y equal to 3, then you will get x is equal to something, yeah, y equal to x equal to 0 आ जाएगा, right? And then you can join those 2 points, you will still get the same line। हो सकता है पॉइंट कहीं और हो बट लाइन सेम ही होगा, बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पाथ ऑफ डॉट्स, पाथ ऑफ पॉइंट्स। पाथ ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है, उसको ज्वाइन करके देन you get the graph of this that given equation। It could be linear equation, it could be circle, it could be ellipse, it could be um, parabola or anything, but equation always represent the path of the points। जो points होते हैं ना, उनके path को अगर define करना है, so उसको define करने के लिए हमें equation लगती है। path को define, जैसे ये path क्या है, ये path क्या है, यहाँ पे points का path क्या है, point का path है straight line। okay, and to define this particular straight line we have this equation। clear है, easy है। okay, again we are understanding basic, that's why I'm going slow, I'm going too much in detail। आपको भी समझना चाहिए, ये कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द शॉर्टकट्स, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दिस मच ऑफ डिटेल। ओके, चलो, लेट्स डू दिस। पॉज द वीडियो एंड प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। हमें ये पता है कि यहाँ पे इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन। वी नीड 2 पॉइंट्स फॉर दैट। 2 पॉइंट्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेंगे और वाई लेंगे। हम लोग एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, तो वाई कितना हो जाएगा, 12/3, 4। एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट वाई इक्वल टू 0, देन एक्स कितना हो जाएगा, 12/2, 6। सो आपके पास पॉइंट्स कैसे आ गए? पॉइंट्स आ गए 0,4 एंड देन 6,0। ओके, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट्स। अभी यार समझ लेना इसको, हाँ, मैं अप्रोक्सीमेशन से पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। 5, 6, and this is what, -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा, और ज़रूरत नहीं है। नाउ वी नीड x तक, ये ठीक है। and we need 1, 2, 3, 4, sorry, 4, 5। Here we have -1, -2, -3, -4। Now let's do this। So पॉइंट ए कहाँ पे प्लॉट करोगे, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y एक्सेस। ये भी लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू 0 यू विल गेट ऑन y एक्सेस। इसको भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ऑन x एक्सेस। प्लीज नोट दिस इज इंपॉर्टेंट। Yeah, I hope you are watching lectures having pen and paper with you. Very important. Now, let's plot the graph। Point A 0,4। So x 0, y 4। y 4 कहाँ पे है? ये रहा y 4। This is your y axis, this is x axis। Then
x6 y0, y0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे, और ये रहा आपका 6. नाउ व्हाट यू डू, you join 4 6. Okay, this is your line. Yeah, I know zigzag हो रहा है, but I hope I hope you understand that. I'm not very good at drawing. नहीं नहीं, वो नहीं समझना, आपको ये समझना है कि ये लाइन है, ये समझना है आपको. ओके, आई एम गुड एट ड्राइंग और नॉट गुड एट ड्राइंग, दैट्स नॉट योर कंसर्न. ओके, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, इजी है. ओके, सो इफ यू नाउ आई अज्यूम दैट इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ लाइन यू विल बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ. अच्छा, ये इन ग्राफ में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट सर ये तो y इक्वल टू 3 है, y का वैल्यू 3 है, अब इसमें लाइन कैसे बनेगा, इसमें भी लाइन बनेगा गाइस. y इक्वल टू 3, that means it is not having x, that means you substitute whatever value of x, you are always going to get y equal to 3. Okay, so you are going to get graph like what. Here you have 1 2 3. This is again 1 2 3. ओके, y इक्वल टू 3, ये हो गया आपका y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस. ओके, y इक्वल टू 3, दैट मीन्स वॉट एवर यू सब्स्टिट्यूट, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 10, फॉर वॉट एवर वैल्यू, ये तो भैया यहाँ पे आपको 3 ही मिलना है. यू आर गोइंग टू गेट y इक्वल टू 3 फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x, राइट. व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे किसी भी x के वैल्यू पे, 1 के लिए हो या 2 के लिए हो या 3 के लिए हो या 0 के लिए हो या -1 के लिए हो, यू आर गोइंग टू गेट y इक्वल टू 3 ऑलवेज. सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, दिस इज द लाइन फॉर y इक्वल टू 3. ओके, ये नोट करना, ये पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, एंड आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वाइट वेल. ओके, देयर इज नो x, so you substitute whatever value of x, you get this. So अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके समझना. For y equal to 3, you get a line parallel to x axis which is passing from y equal to 3. So y equal to 3, if you want to, if you have to plot the line, it will be parallel to x axis passing through y equal to 3. Okay. Similarly, if I have x equal to 4, इसका अगर हमें plot करना है, so here we get 1 2 3 4, 1 2 3 4. X is equal to 4. So again, here if you substitute any value for y, if you substitute y equal to 0, y equal to 1, doesn't matter to this because there is no y here. X is equal to 4. This should be parallel to y axis passing through x is equal to 4. This is what? Parallel to, ये तो ऐसा मैं समझना कि दो लाइन बना दी यार. Please guys, support me. I hope you're understanding this. This is what? X is equal to 4, the equation of line where x is equal to 4, parallel to y-axis and passing through x is equal to 4. Easy है? Easy है ये? Yeah, good. Okay, so I hope this is clear. इसको मैं conclude करता हूँ. Y equal to any number, it will be parallel to x-axis passing through that point of y. X is equal to any constant, it will be passing from that value of x and parallel to y-axis. Okay, ये याद रखना यार, ये भी important है, आपको एग्जाम में काम आएगा. ओके, चलो आगे चलते हैं. Now what do you do with y equal to x? Can you plot the graph? Now here जो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, substitute y x is equal to 0 at once and y equal to 0, then you're going to get 2 points. यहाँ पे तो काम करेगा नहीं because both are 0 0, right? So we are bound to substitute something else.
some other value. So let's say if I substitute x equal to 1, y will also be equal to 1. So this line will pass through, this line will be passing through what? Origin. This line will be passing through the origin. यहाँ पे origin से पास होगा ये, और कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली आपको ऐसा दिखेगा। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एंगल देखें, एंगल क्या है बताओ? अक्यूट एंगल दिख रहा है यहाँ पे विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। Yeah, I'm going ahead of solving, just plotting this, plotting the equation of, plotting the graph for this equation. ये तो अपना हो गया, this is for y equal to x. उसके आगे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, which is not required for this particular question, but आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आपको स्लोप क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? acute angle दिख रहा है? Yeah, क्यों दिख रहा है ऐसा? Because you can see m is positive there, right? If you compare that, this equation y equal to x with y equal to mx plus c, what is the value of m here? M is equal to 1. And for m equal to 1, it is positive. So positive side of x is acute angle. Clear है? बताओ clear है कि नहीं? Easy है ये? Hmm? Okay. So now next point is, let's understand the linear equation with change in slope. समझते हैं. So if I have, समझो इस बात को, if I have y equal to mx plus c in terms of slope, and if I have m positive, तो क्या होगा? लाइन कैसी बनेगी? शोइंग acute angle. ओके, सिर्फ इतना ही समझाना था. और if f, ये तो ये हो गया, this is line for m is positive. और अगर m नेगेटिव हुआ तो लाइन कैसी बनेगी? Line will be something like this. Okay. Now, don't worry about this line being at the right hand side of slope, right hand side of the origin or left hand side of origin. वो अभी उसकी जरूरत नहीं है. That we can plot the accurate line we can plot when we have an equation for that. अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं. अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि m अगर स्लोप में चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो लाइन कैसा दिखेगा. तो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, फॉर m नेगेटिव, दिस इज फॉर m नेगेटिव. ओके, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर है? तो ये हमें पता होना चाहिए. या दिस इज इट इन टुडेज लेक्चर. ये अब हमें आज इतना ही समझना था. ये बहुत पहला लेक्चर है ग्राफ का, अभी बहुत है. वी हैव गॉट अराउंड 8 lectures right now. We have 8 lectures, so we have long way to go. या सो ये हमने बेसिक समझा है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे हम लोग ये देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे. फर्स्ट लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंड ग्राफ वेल. बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि इसके ऊपर हमें अलग से लेक्चर चाहिए, अलग से टॉपिक को कंसीडर करो, तो ये अपन बनाते हैं. हालांकि ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में डिस्कस किया हुआ है, बट लेट्स हैव वाइब्स ऑफ ओनली ग्राफ 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 अराउंड अस. ओके, so this is it in today's lecture. I will see you in graph class 2 of graph in the next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning.